वेलकम शफाक नेटवर्किंग बेस्ड ऑन CCNA CSAT। आज का जो टॉपिक है जो जिस पर हम लैब करने जा रहे हैं दैट इज VPN। तो VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसका मतलब है कि हम कोई भी प्राइवेट नेटवर्क जो है वो हम पब्लिक राउटर से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं विद हाई सिक्योरिटी। हम उस टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम क्या करेंगे, मान लो ये R1 एक राउटर है। R1 एक edge router है, this is R2 is other edge router and this is ISP. And R1 is communicable with the ISP router and R2 is communicable with the ISP, this ISP router. And the R1 is connected with the switch and switch is connected with the many private devices. That is with IP with private network 10.0.0. In the same way here, R2 is connected with switch 2 and other private devices. Now if I want to connect that this 10.0.0 should be communicable with this 20.0.0.0/8. But it's possible only the normal thing that we have to run any dynamic protocol, then share all the routes over the public router. And this means that to share the private network over the public router, there's a high chance of it is very less secure. It is less secure. It is less secure. But there is another technology that is called a virtual private network. With the help of a virtual private network, we can share the routes over the public network with high security. With high security. नाउ हाउ द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे काम करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे काम करता है? ये एक लॉजिकल, अगर R1 को R2 से आप कम्युनिकेट करना होगा तो क्या कर हम एक लॉजिकल जो है एक टनल बनाते हैं, लॉजिकल टनल, दैट इज कॉल्ड टनल। हम यहाँ से भी एक टनल बनाएंगे और यहाँ से भी टनल वन बनाएंगे और यहाँ से भी एक टनल वन बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल इंटरफेसिंग। इन फिजिकली यू कैन नॉट सी दिस टनल, बट लॉजिकली जो है हम राउटर के थ्रू हम लॉजिकली बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टनलिंग। दिस टनलिंग इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड GRE टनल। हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड GRE टनल। इस टनल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिकल टनल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्राइवेट नेटवर्क को इस टनल के थ्रू हम इसको पास करते हैं टुवर्ड्स R2 विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IP नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक IPs। इससे क्या होता है, जो हमने एक अलग टनल बनाई ही फ्रॉम R1 टू R2, इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो नेटवर्क है, आपका जो प्राइवेट नेटवर्क शेयर किया गया फ्रॉम R1 टू R2, इट इज वेरी हाई सिक्योर। very high secure as compared to share the routes using dynamic protocol in the normal mode, जिस तरह हम करते जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर लैब करेंगे, शॉर्ट लैब बनाएंगे हम इस पे कि हम कैसे प्राइवेट नेटवर्क्स को हम एक राउटर से दूसरे राउटर तक यूजिंग द प्राइवेट नेटवर्क, यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क, but using the technology, that technology is called the virtual private network. So now move the this is the Cisco packet tracer. Now we need three routers here. One is R1 and this is ISP router and this is R2. So configure that. Now this is the router R1 here, same config as this is R2 and this is ISP router. This is ISP router. Now I will change also host name of this router to make it more compatible in configuration. R1 to save it, and this is ISP router. This is ISP, and this is R2 router. Now here I need a switch here. So I need switch here. This is a switch, and this is other switch, and I need two devices here. There are two devices, PC1, PC0, which will be configured as private networks, private devices here of this. Now connect these PCs with the switch
Okay, this is called the VPN technology. Now, what you do? So there may be IP address 192.1.12.0/24 and 193.1.12.0/24, and here the we will 10.0.0/8 will be the private IP, and here will be the other IP address 10.12.0/8. So now, first of all, we will configure ISP router, and here may be one loop back here, which will be accessible to both the routers R1 and R2 5.5.5.5. 5.5 is a loop back. Now, this is ISP router here. What we'll do here, config interface. We have to interface the we have to configure the two interfaces. One interface is on the side of R1 router, and this interface on the side of R2 router. That is F0/0, F0/0 interface. Now, IP address will be 192.1.12.1.255.255.255.0. No SH. Interface there is others of 0/1. It is on the side of auto router, then the IP address will be 193. 193.1.12.1.255.255.250. No SH. Now interface loop 0 हम इंटरफेस करेंगे. इसका हम IP एड्रेस क्या रखते हैं 5.5.5.255.0.0. नो SH. इसको हम सेव करते हैं. इसके बाद हम R1 पे आएंगे. R1 पे जो राउटर है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं. कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस जो है IP एड्रेस क्या है 192.1.12.255.255.255.0. नो SH. सो ये इंटरफेस अप हो गया. और इसके बाद हम क्या करेंगे IP राउट हम चलेंगे स्टैटिक राउट टुवर्ड्स द ISP route. Why we call static route? Because we have to access the loopback of our ISP router. So 0.0.0 is a default route, 0.0.0, and the 192.1.12 192.1.12.1. So where is the problem here? Okay. So save it. Okay. अगर हम करें do ping, अगर हम 5 dot को ping करेंगे 5.5, so you will see there is a response from our ISP router. Now, in the same way, we'll configure our two router in the same way. Interface F0/, what is the interface here? F0/0 IP address 193.1.12.255.250. No SH. So interface, okay, I will make it. Now default router, I have to make two default router towards the same router, that is ISP router, to access that 5.5.5.5. So 0.0.0, 0.0.0, 193.1.12.1. So now if we go to ping 5.5.5, so it will be accessible to ISP router, that is 5.5.5. So what you have to do, next step will be we'll configure again our router for private networks. So we have to configure now private network, that is interface F0/1.
interface f0/1, so no sh, so IP address will be now we will give address 192 dot address 10.0.0.1255.0.0. So this is the address, no sh. This is the private address of f0/1. Now in the same way, we will configure the PC here. So the PC will be 10.0.0.255, then 10.0.0.1 will the gateway. So okay. Now in the same way, we'll configure the PC here. Desktop, the private address will be 10.0.0.3, and the gateway will be same, that is 10.0.0.1. In the same way, we will configure this router also, that is auto site, the private interface f0/1. So IP address will be 20.0.0.1255.0.0 and no sh. So now configure the PC also. So we will give the 20.0.0.2, then default gateway is 20.0.0.1. So now under PC we'll configure here. So we'll make it 20.0.0.3, and gateway is same 20.0.0.1. Okay. Now now this is the now what we have to do. What we want now? We want not we want that this private network 10.0.0. Should be communicable with this 20.0.0.0. So what is the how we can give this by using the VPN technology? First of all, we have to make the logical tunnel. Logical tunnel will make a tunnel that's called the GRE tunnel. That is logical tunnel here. Okay, that's called the GRE tunnel. That's called the GRE tunnel, और सिंपली टनल. इस टनल को हम क्या करें? सबसे पहला पॉइंट जो है टनल में हम क्या करेंगे? जीआरई टनल में हम क्या करेंगे? सबसे पहला कॉन्फ़िगर, हम दोनों राउटर्स को एक लॉजिकल टनल बनाएंगे, एक लॉजिकल इंटरफेस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द टनल इंटरफेस. को सबसे पहला पॉइंट जो होगा टनल इंटरफेस इज द सेटअप वन ऑन द बोथ द राउटर्स. तो हम जाएंगे टनल इंटरफेसिंग पर. तो सबसे पहले हम अब 0 पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे. सबसे पहले इंटरफेस टनल, जो कि कोई इंटरफेस नहीं है फिजिकली, बट इट इज लॉजिकल इंटरफेस, दैट्स कॉल्ड इंटरफेस टनल वन. उसके बाद क्या है देंगे? इसका हमें दो चीजें देनी होती है. एक होता है सोर्स एड्रेस, क्या होता है? एक इसका हम आईपी एड्रेस देंगे. आईपी एड्रेस क्या रखेंगे हम? इसका आईपी एड्रेस इज व्हाट डू आईपी एड्रेस क्या रखेंगे इसका? इस टनल का हम आईपी एड्रेस क्या रखेंगे? इसको हम टनल जो आईपी एड्रेस 10.0.0.4 255.0.0.0. So it laps with it overlaps with तो हम क्या रखेंगे इसमें? जो हम आईपी एड्रेस में हम रखते हैं 11.
ओके, 11.0.0.1 ये हमने आईपी एड्रेस रखा। तो 11.0.0.1 इस आईपी जो ये टनल बन गया, यहाँ से आप 11.0.0.1 रखेंगे, उधर से हम 11.0.0.0.2 रखेंगे, नो ऐसा। उसके बाद हमें इसको जो ये फिजिकल, ये एक लॉजिकल टनल है, तो हमें ये एक्चुअली हमें इट हैज टू बी, जो एक्चुअली इसका पाथ कहाँ से है, पाथ तो इसका है पब्लिक आईपी से ही, पब्लिक नेटवर्क से ही। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो हमें सोर्स, पब्लिक आईपी का सोर्स एड्रेस क्या था, दैट सोर्स एड्रेस इंटरफेस एफ 0/0 दिस इज सोर्स। तो हम करेंगे सोर्स टनल सोर्स है F0/0। और टनल डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन कहाँ पर है, डेस्टिनेशन दिस F0/0। What is the address of F0/0? That is 193.1.12.2। यही तो हम लिखने जा रहे हैं इधर, 193.1.12.2। ये है टनल डेस्टिनेशन। तो ये हुआ टनल इंटरफेस। ना उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ARGRP प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल चलाएंगे, राउटर ARGRP हैंड, नो ऑटो समरी। और इसमें हम दो नेटवर्क जो है 11.0.0.0, और हम कौन सा हम नेटवर्क जो है इसमें डालेंगे 10.0.0। ये दो नेटवर्क हमें जो है पास करने हैं फ्रॉम थ्रू GRE टनल। तो इस द सेम वे वी हैव टू डू अदर इंटरफेसिंग। तो यहाँ से हमें दूसरा स्टेप क्या था, नाउ सेकंड स्टेप इज टनल सोर्स क्या है, टनल सोर्स एंड टनल डेस्टिनेशन, और उसके बाद है राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर प्रोटोकॉल या राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये चीज हमें याद रखनी है, एक तो टनल सोर्स क्या है, टनल डेस्टिनेशन, और राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, वो चीजें हम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले हम टनल इंटरफेसिंग करेंगे, इंटरफेस टनल वन, जो हमने टनल का जो आईडी रखा वन, यहाँ से भी और वही आईडी हमें यहाँ से भी रखना है। तो टनल वन करेंगे इधर, उसके बाद इसका आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, 11.0.0.2 255.0.0.0। तो ये जो लॉजिकल बन गया, अगर आपने यहाँ से एलिमेंट डॉट रखा इस इंटरफेस में 11.0.0.1, तो यहाँ से आपको क्या होना चाहिए, 11.0.0.2 11.0.0.2। So it is a logical tunneling. It is a logical interface. We are giving we are making the logical interface and with giving IP addresses. यहाँ से हमने 11 डॉट दिया, ओके 11, ये 11.0.0.1 11.0.0.2। तो हम यहाँ से यही कर, और यहाँ से भी हम नो एसएच करेंगे। तो यहाँ पे टनल सोर्स क्या बन जाएगा इधर, व्हाट विल द टनल सोर्स हियर, दैट इज सेम F0/0। टनल सोर्स हमेशा वही इंटरफेस होता है जो राउटर का इंटरफेस होगा F0/0। तो टनल डेस्टिनेशन क्या बनेगा, इसमें रिवर्स होगा, टनल डेस्टिनेशन विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ दिस F0/0, दैट इज 192.1.12.2। तो उसके बाद तो हो गया टनल अप, आप देख सकते हो ऑन इंटरफेस टनल अप, टनल चेंज स्टेट टू अप। तो नाउ विच विल राउटर ARGRP हैंड, नो ऑटो नेटवर्क, एक तो हम 11.0.0 चलाएंगे और दूसरा चलाएंगे हम 10.0.0.0। आप देख सकते हैं इसने नीबर रिलेशनशिप बनाई किसके साथ, 11.0.0.0 से। क्या हमने ISP से कुछ किया, नहीं। क्या हमने ISP के कॉन्फ़िगरेशन में कोई डायनेमिक प्रोटोकॉल दिया, नहीं। हमने कोई भी राउटर जो है वो हमने कनेक्ट किया फ्रॉम दिस एंड दिस, नो। सो हमने क्या किया, ओनली टू यूज VPN टेक्नोलॉजी टू यूज द टनलिंग इंटरफेस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द VPN टेक्नोलॉजी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वी आर एक्सेसिंग द प्राइवेट नेटवर्क ओवर द पब्लिक नेटवर्क एंड इट इज वेरी हाई सिक्योर, बिकॉज हमने एक अलग से एक टनल बनाई। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, शो IP राउट, यहाँ आपको कोई भी राउट जो है ना 10 का दिखाई देगा ना आपको 11 राउट का दिखाई देगा, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क जो है। अगर हम यहाँ पर पहले, सबसे पहले में यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये राउट सारे आ गए, तो ये अप हो गए, तो हम शो IP राउट करेंगे, शो IP राउट ई। आप देख सकते हो 10 राउट भी आ गया एंड जो 193.1.12.0 वो भी आ गया, क्योंकि वो था सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और यहाँ से अगर यहाँ से 10 आ गए, यहाँ से भी क्या आया होगा, यहाँ से भी शो IP राउट ई। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमने जो है यहाँ से हमने जो है एक चीज गलत की, हमने 20 नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया।
तो हम क्या, तो यहाँ से हमें 10 को एडवर्टाइज नहीं करना है, नो नेटवर्क। तो यहाँ से किसको एडवर्टाइज करना है, 20 को, 20.0.0। तो जब हमने 20 को एडवर्टाइज किया, 20, तो यहाँ से हम अगर जब चेक करेंगे शो आईपी राउट, ये आप देख सकते हो 20 भी आ गया। तो R1 और R2 पे 20 आ गया। तो अगर हम आईएसपी राउट को चेक करेंगे, क्या इस पे कोई राउट आ गया शो आईपी राउट? तो आप देख सकते हो इसमें खाली क्या क्या होगा, 192, 192, 193। इसमें आपको कोई भी राउट, ना 10 का राउट होगा, ना होगा 20 का राउट, यानी कोई भी प्राइवेट जो है आईपी होगा वो आईएसपी राउट में आपको दिखाई नहीं देगा। दैट इज वाई इट इज वेरी हाई सिक्योरेबल, नो वन कैन हैक इट, नो वन कैन, आपकी जो प्राइवेट जो आईपी है उनको कोई भी हैक नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ टनलिंग इंटरफेस। हम लॉजिकली हम पास करते हैं कोई आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसमें एक चीज है कि इसमें भी लेस सिक्योर है। इसको हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी सेक। आईपी सेक, तो उसके उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। आई होप। तो अगर हमें इस प्राइवेट नेटवर्क से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, किसको, 20 नेटवर्क को, तो आप देख सकते हो पिंग, अगर मैं करूंगा पिंग 20.0.0.2, आप देख सकते हो तो रिप्लाई आना होगा। तो देयर इज रिप्लाई फ्रॉम 20 नेटवर्क। So without directly communicating with ISP, you can use the VPN technology and tunneling interface using to access the private network using VPN technology. I hope you understand this. I hope you understand how to configure the VPN technology, VPN configuration. I hope you understand this. Thank you very much.